अब बात कर लेते हैं ओरिजिन क्या है न्यूट्रिएंट्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं, जो कि हमें फिगर 1.1 में शो किया गया है। इसमें लिखते हैं डैट ईच टाइम ब्लड पासिस थ्रू द बॉडी इट आल्सो फ्लो थ्रू द लंग्स। द ब्लड पिक अप ऑक्सीजन इन alveoli, thus occurring the oxygen needed by cell. The membrane between the alveoli and the lumen of the pulmonary capillaries. The alveolar membrane is only 0.2 to 2.0 micrometers thick, and oxygen rapidly diffuses by molecular motion throughout this membrane into blood. यहाँ पर बात कर लेते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। वो क्या होते हैं? द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ थाउजेंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम. Some of the most intricate of these systems are genetic control systems that operate in all cells to help regulate intracellular and extracellular function. This subject is discussed in chapter 3. Many other control systems operate within the organs to regulate function of the individual part of the organs. Others operate throughout the entire body to control the interrelationship between the organ. For example, the respiratory system operating in association with the nervous system, which regulate the concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid. The liver and the pancreas control the glucose concentration in the extracellular fluids, and the kidney regulate the concentration of hydrogen, sodium, potassium, phosphate and other ions in the extracellular fluids. यहाँ पर आपको फिगर 1.3 दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें एक पैराग्राफ एक क्या कहते हैं, एक चेन टाइप से बनाई हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर बाय आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर्स. Signals from the sensor baroreceptor are sent to the medulla of the brain, where they are compared with the reference set point. When arterial pressure increases above normal, this to abnormal pressure increases nerve impulses from the baroreceptors to the medulla of the brain, where the input signals are compared sympathetic nervous system activities. Decreased sympathetic activities cause dilation of blood vessels and reduce pumping activity of the heart, which return arterial pressure toward normal. अब हम रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि सेवरल सिस्टम्स contribute to arterial blood pressure regulation. One of these baroreceptor system is an excellent example of a rapidly acting control mechanisms. In the wall of the bifurcation region of the carotid arteries in the neck, and also in the arc of the aorta in the thorax, are many nerve receptors called baroreceptors that are stimulated by a stretch of the arterial wall. When arterial pressure rises too high, the baroreceptors send barrages of nerve impulses to the medulla of the brain. Here, these impulses inhibit the vasomotor center, which in turn decrease the number of impulse transmitted from the vasomotor center throughout the sympathetic nervous system to the heart and blood vessel. Lack of these impulses cause diminished pumping activity by the heart and dilation of peripheral blood vessel, allowing increases blood flow throughout the vessels. Both of these effect decreases the arterial pressure, moving it back toward normal. बाकी आप देख सकते हैं फिगर 1.3 में, जहाँ पर ब्रेन मेड्यूला वैसो सेंटर जो सिग्नल भेजता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की, वहाँ पर आता है, जो उनको इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर जो कंट्रोल वेरिएबल होता है, जो बैरोरिसेप्टर से सेंस की जाती हैं। इसी तरह ये साइकिल चलता है, और इसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर बाय द आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स भी कहा जाता है।